two singers and rappers from Bombay और हमारा नया गाना आया है called खोई सी. Please check it out. Yes, please. This is our second collaboration. Pratika is part of India's first female hip hop collective called as Worldwide Women. हमने एक cypher release किया था last year called as Jubilo K, March 8th Women's Day पे. And ये गाना जो है खोई सी, actually हमने बनाया था last year जून में. थोड़ा सा बैक स्टोरी आपको देना चाहूँगी कि हमारी जर्नी कैसे सिमिलर रही है और किस मोटिवेशन और इंटेंशन से हम मिले और ये गाना कैसे फ्लो हुआ नेचुरली. Last year we lost one of our common close friends earlier on in the year, and for both of us it was one of the first times we lost someone we really knew very closely from the hip hop community. So it kind of shook us to the core, and since 2021 हम लोग दोनों effort डाल रहे हैं कि हम consciously reach out करें बाकी female rappers को ताकि एक ecosystem बने रहे sisterhood का. भाईचारा तो सुना होगा आपने, बहनचारा है नहीं, तो हम बना रहे हैं बहनचारा. सबसे bad word. थोड़ा गाली नहीं है. बट बेसिकली हम लोग मिले अराउंड जून में और ये बीट मुझे भेजा था हाफ टोन नाम के प्रोड्यूसर ने, और मुझे लगा कि ये एकदम परफेक्ट बीट है मेरे और प्रतिका के लिए कुछ करने के लिए. प्रतिका की जर्नी मुझे बहुत इंस्पायर करती है. जो डिसिप्लिन इसमें है, जो जोश इसमें है, उससे मैं लिटरली एनर्जी डिराइव करती हूँ. मैं उसको बोलती हूँ हर बार हम मिलते हैं तो मैं प्लग कनेक्ट करती हूँ और एनर्जी इससे लेती रहती हूँ, बिकॉज शी इज अ फुल ऑन एक्सट्रोवर्ट एंड आई एम सुपर इंट्रोवर्ट नाउ. लाइक मेरा एक्सट्रोवर्टिज्म खर्च हो जाता है म्यूजिक में, तो खर्च हो जाता है यार, पूरा ले जाती है एक्सट्रोवर्टिज्म. एंड दीपा इज वेरी वेरी इंट्रोवर्टेड. प्रतिका का तो स्टेज नेम ही प्रतिका है, सो शी इज ऑल टुगेदर, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एवरीथिंग टुगेदर. जब हम लोग मिले तो एक्चुअली पूरा दिन हम टाइम पास कर रहे थे. 2:30 to 8:30 हमसे इधर की बातें, वी वर जस्ट कनेक्टिंग एंड यू नो लाइक लाइफ जर्नी में हम अभी कहाँ हैं, हमारा मोटिवेशन क्या है, एम्बिशन क्या है फॉर द नेक्स्ट 5 years, वो सब हम डिस्कस कर रहे थे. एंड देन 8:30 से 11:30 3 घंटे के बीच में हमने लिख के ये डेमो रिकॉर्ड किया था. सो इट्स यू कैन वेरी मच से कि ये गाना एकदम ही दिल से फ्लो हुआ है. For me, for the longest time, I wanted to work with more women in the hip hop scene and then just like in music in general. I've also found Dee's journey extremely inspiring because obviously she's like one of those people in hip hop who has actually just stood so strong, worked so hard throughout her life. Something that we both kind of see in each other, which is somewhere where that journey has all come together. And we're similar in so many ways, but not at the same time. So that is something, that contrast is something very beautiful in our journeys that came out through a song which a lot of people would not expect to hear from both of us, and being on the same track also, because my music is like way more in like a heavy and angry and very frustrated socio-political zone most of the time. But then what Narmi jo hai that actually came out of this track was just something that came out of two of us working together. Just both of us understanding the tough side, the tough exterior that we always show the world that I'm looking, but inside we're all like softies. So somewhere I think that came out in a very strong and beautiful way through a song like this. So my verse starts with a singing part that goes, building expectations. I'm observing from my station, building a world around me so I don't have to face these situations. Living in a city like Bombay and just living life in general, we are very used to a certain kind of hustle and a certain kind of way of life that just goes on. And because there's always constantly so much happening और हम लोग constantly bombarded रहते हैं इतने सारी चीज़ों से, हमारे expectations थोड़ा like they increase. At the same time, knowing how things go and the way life actually runs, we shouldn't keep our expectations at that much of a high, which is something that I personally tell myself so that मेरे expectations ज़्यादा बढ़ते नहीं and I don't have to face uncomfortable situations जहाँ पे ज़रूरत नहीं है for me to be like worried or perplexed or angry or frustrated in general. The next part is, living is fast paced, growing older is passe, trying to stay in the moment because the effects are gonna cascade. I don't fit into these boxes someone made for us, peace of mind is tough. So everyday life is super fast, we're just going through all of that. While we go through it, it's so usual for us to keep saying, oh यार I'm growing old, यार इतनी उम्र हो गई है, अभी क्या होने वाला है, like how is life gonna go, etc etc. So that's something that we all already know about.
I'm always trying to stay in the moment क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होते रहते हैं and उनके एक एक like doing one thing leads to another and then this whole domino effect and like, life cascades basically. Um, Also just being put into boxes or being defined in society by a certain image that you carry or a certain job that you do specifically should not limit you as a person. So that is sort of what that bit of the verse says. Always entangled in a string of probabilities, thrown into a fire of infinite possibilities, because when the cycle starts at birth, it's going to end. You're anxious, then scared, so excited, then dead. So this part is about you're just going through life and there are these random unexpected things that are just thrown at you continuously that you're trying to catapult, you're trying to push through क्योंकि like tension aa raha hai, like how do I survive and go through all of this. When the cycle starts at birth, it's going to end. It just talks about how cyclical life is in general and how when we start our journey in one sense, we end up kind of doing something completely different or it just changes over time क्योंकि इतने सारे emotions के साथ हम लोग गुजरते हैं through life that we tend to get attached through different emotional experiences and just all of that stringing together and going through life is before you know it कुछ होने के पहले ही like you're there or you're not the next day. So it's about going through all of those emotions. The hustle is real. I'm always counting my blessings. Happiness comes just like the hard times and we are in passing. So even though I'm exhausted, I want to rise above and the going's going to go. So be that diamond in the rough. But the hustle is real, yaar. हम लोग का everyday hustle is just going to keep happening. And for even the smallest things that mean something to us and the things that don't, everything that happens to us comes about because of a specific reason. And I'm very grateful for everything that I have in my life. I think most people who when we were writing this song also we were really talking about how we're so happy to be where we are despite all of the things that have happened in our lives. So that's one thing that I'm really proud and happy of, just counting all of those blessings. Happiness does come like the hard times. मतलब एक balance होता है life का. So if you're going to have good times, you're going to have bad times, you're going to have crazy, anxious, frustrated, super relaxed, super frustrating. A plethora of emotions just keeps, like you keep going through in life. And I may be tired through this entire hustle, like just doing so many things over and over again, facing the same shit, facing the same problems, that I'm just exhausted, but at the same time I know this is what I want to do and because of that I'm going to always try to rise above. और चीज़ें तो होते रहते हैं यार, but at the same time it's up to you as an individual to keep going and shining like that little gem because you're Hira man. And we should just embrace that and like live life beautifully even though it can be very very tiring and very distracting. वो मुझे इन ख्वाबों में तन्हाई थोड़ी थी, गुजरे हजारों हैं पर बताए ना कोई भी, रास्ता तो खुद है चुनना, भटकूं मैं खोई सी, बढ़ चुकी है बेकरारी, खुशी से भी रोई थी. Yes. First two lines I think is personal to me कि बड़े बड़े ख्वाब जब देखते हो तो loneliness feel होता है कि you know like it's good to have a community to grow with. There is only so much you can do on your own. Yeah. So that first two lines is about that, and the second two lines is the fact कि बॉम्बे शहर में इतने लोग इतने ख्वाब देख के चलते हैं कि हम भी भटक रहे हैं, कभी कभी खो जाते हैं, कभी कभी खोए से लगता है इस जिंदगी में. हमारा गाने का नाम एक्चुअली पहले टायर्ड था. सो द फैक्ट दैट हसल हमारा ऐसा है कि मोटिवेट अपने आप को खुद ही करते रहना पड़ता है, बट कभी कभी थक जाते हैं यार, कितना ही सपने देखे भी. Yeah, and the last line is basically खुशी से भी रोई थी, बढ़ चुकी है बेकरारी, which is again about mental health. That us as women, we realize that being amongst men in the scene all the time, we are probably subconsciously being more harder than we need to fit in. I think this goes for women around the world, where you know like we feel the need to toughen up like men. Keep proving ourselves Exactly. over and over just to make a point or just to be heard or seen. Exactly, and I feel like we're taking that power back now,
and we are totally owning our vulnerability and our sensitivity and unapologetically saying कि हम खुशी में भी रोते हैं, दुख में भी रोते हैं, गुस्सा है तो भी रोते हैं। करना मैं चाहती हर एक मुकाम को हासिल क्योंकि मुझसे पहले ना किया किसी ने ना काबिल कोई, जो कहे कि मुझे जो मिला मेरा हक नहीं, जलते हैं बोलने वाले इसमें कोई शक नहीं। आई थिंक द फर्स्ट 4 लाइन्स आर प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैं बस अपनी जर्नी के बारे में बता रही हूँ कि जब मैंने 2011 में शुरू किया था तब इतने रैपर्स नहीं थे, फीमेल रैपर्स तो और भी कम थे, तो आई एम जस्ट फ्लेक्सिंग कि मैंने वो सारे मुकाम को ऑलरेडी हासिल कर लिया है जो लोग अभी से सपने देखना शुरू कर रहे हैं। So basically I'm just trying to establish the fact that I've been in this game since the past 10 years and anyone who wants to doubt whether I deserve what I've got actually is just a jealous hater and doesn't really know anything about my journey. समझते खुद को ये भगवान, मैं इनका भक्त नहीं, माना कि आगे जीत पर डर के लिए वक्त नहीं। Again, it has double layer meanings in this. I'm also kind of dissing the political environment right now and also kind of dissing artists who have God complex, जिनको लगता है कि you know like भगवान, मैं ही भगवान हूँ, कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूँ। So this is like a diss for that basically कि समझते खुद को ये भगवान, मैं इनका भक्त नहीं, माना कि आगे जीत पर डर के लिए वक्त नहीं। आई थिंक अभी के डे एंड एज में अगर किसी को एंग्जाइटी नहीं है तो वो बड़ी बात है। आई थिंक हम सबको थोड़ा थोड़ा एंग्जाइटी है। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्स आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू हैव टू फेस योर फियर्स हेड ऑन एंड योर लाइफ इज यू नो इन योर कंट्रोल मोर देन एनीवन एल्स। जो सारे रिलीजन्स या कोई भी डिसिप्लिन आपको यही चीज़ सिखाने की कोशिश करता है कि अपने अंदर का संतुलन अगर ठीक करोगे तो बाहर की चीज़ें आके तुमको हिला नहीं पाएंगी। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि माना कि आगे जीत पर डर के लिए वक्त नहीं, पूछे तो बोले सब सही, मतलबी दिल रुलाए काफ़ी यादों में, धीमी धड़कन चलती इन सांसों में। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि काफ़ी टाइम हम ही अपने आप को टॉर्चर करते हैं, अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सोच के या फिर फ्यूचर के बारे में सोच सोच के प्रेजेंट मोमेंट को हम जीना छोड़ देते हैं या उसके बारे में उसको फुल्ली एक्सपीरियंस करना छोड़ देते हैं। सो आई फील लाइक मेडिटेशन इज़ वन प्रोसेस, मेडिटेशन एज वेल एज योगा इज समथिंग दैट हैज हेल्प्ड मी really ground myself in the present moment, and the more I breathe the more I'm getting better at meditating. So धीमी धड़कन चलती इन सांसों में, आज फिर जी के दिल थक गया, भटक गया, मोह माया में फिसल गया, थामा हाथ तेरा तो लगे जग नया, पर क्या था सिर्फ ये ख्वाब, आंखें खोली मैं जग गया। इसमें भी 2-3 मल्टी मीनिंग्स है बेसिकली। आई एम टॉकिंग अबाउट bunch of things. One is could be a boy, could be about love, one is just self love, and one is my love for the nature, my love for mother earth. आप वीडियो में देखोगे तो भी आपको दिखेगा वो कॉन्ट्रास्ट जो हमने क्रिएट करने की कोशिश की है। सो इन द लास्ट 4 लाइन्स आई एम बेसिकली, आई कुड ईदर बी टॉकिंग टू अ लवर, टू माई सेल्फ और टू मदर नेचर, वेयर आई एम सेइंग कि आज जी के मेरा दिल थक गया है, मोह माया में भटक गया है, but when I sit still with myself, I am always able to connect back to myself. तो कभी कभी लगता है कि पूरी मेरी जो लाइफ है वो एक फिल्म की स्टोरी या ड्रीम से कम नहीं है। सो आई एंड बाई सेइंग क्या था ये सिर्फ ख्वाब, आंखें खुली मैं जग गया। So it's also about not being ignorant and literally opening your eyes to the reality around you and trying to be empathetic. That's it. Also, the most amazing part about this whole project is the videos directed by Dee. It's one of her first few projects where she's actually overlooked the entire thing. और यार मतलब बहुत सही लग रहा था. Like there's an artistic and a creative side to us beyond just music, and that's something I think that kind of comes out through all of this. Like our ability to write, our ability to see things, portray things in a certain way, and just knowing that हम लोग दोनों इस चीज पे भी connect करते हैं is just, it's larger than just being two rappers who come together to write a song. You know, it's like much more than that, and that's what I really love and appreciate about this channel. इतनी खुशी। That is Khoisi for you guys. Please go check out our video. Shout out to Loud Magazine for this awesome breakdown series.
रसिका ऐसे ही रहती है 24/7 ऐसे रहती है। उस दिन जाके वो लोग ऊंचे ख्वाबों में तन्हाई तो